नेट आएगा ना, मतलब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से खुल जाएगा वाईफाई जब नेट आएगा। नहीं देखिए ना, बार बार पता नहीं, बात नहीं। Assalamualaikum everyone. My name is Dr. Zishan Ashraf and I'm working as PGR in ENT department at Sheikh Zayed Hospital, Lahore. Today we have selected a topic for our general club meeting. It is outcomes of coblation tonsillectomy versus bipolar electrocautery tonsillectomy in pediatric. The results from this study, a total of 120 patients were selected randomly, and they were divided into two equal groups. Group A, including of coblation tonsillectomy, and Group B, consisting of bipolar electrocautery tonsillectomy. Coblation tonsillectomy had following advantages. It had lesser mean pain score. मोबाइल पूरा नेट कनेक्ट कर चुके हैं हमारा। बात करें contribution another flow. If you start a Christmas flow is like करेंगे जो all ये वाला ये उनको भी समझाओ ये जो सामने बैठे हैं उनसे क्या सर ये आप ही समझा के रखिए कैसे करना है राइट असली है पता है थोड़ा बहुत Sorry, we were Sorry, we were combination coblation tonsillectomy had following advantages. It had lesser mean shorter pain duration, it had shorter pain duration, lower incidence of reactionary and secondary hemorrhages, and shorter duration of healing. The conclusion of the study was that coblation tonsillectomy is associated with lesser pain severity, shorter pain duration, fewer bleeding incidents, and more prompt healing. The background of this study is that tonsillectomy had been a common surgical procedure in the setting of pediatric ENT practice. It is mainly carried out to treat recurrent attacks of tonsillitis,
and sleep disorders. The indications adopted by American Academy of Otolaryngology Head and Neck Surgery were utilized in this study. The surgical techniques we had are complete tonsillectomy and partial tonsillectomy. The surgeon's techniques available are cold steel instruments and suture ligatures, unipolar and bipolar electrocauteries, coblation bands, hormonal scalpel, and CO2 lasers. In electrocautery, we have unipolar and bipolar electrocauteries, both of which actually have the advantage of dissection and hemostasis at the same time. They are safer to use in patients with implantable electrical devices, like patients having cardiac pacemakers. Next is the hormonal scalpel, which works on the principle of ultrasonic waves. It had frequency of 55,000 per second. It actually causes cutting and sealing at the same time with minimal thermal damage. Intercapsular tonsillectomy, it had been actually debatable safety profile and questionable recurrence rates. Most common techniques we use for intracapsular tonsillectomy are microdebrider, bipolar radiofrequency ablation, and CO2 swift phase cryptolysis. What is microdebrider? Microdebrider is actually commonly used for intercapsular tonsillectomy. It has a principle of rotatory shaving, which is also connected to a suction device. So it cuts the tissue and pulls the tissue at the same time. Next is the radiofrequency ablation. Radiofrequency ablation actually it works on the principle of molecular dissection energy that ablates the tonsillar tissue. It causes ionization of conductive saline medium, which is also known as coagulation low temperature plasma excision. Regarding bipolar electrotonsillectomy, it has been widely used in surgical practice, as I have already discussed in previous slides. Our today's topic of interest is coagulation tonsillectomy. It has advantages of over both the cold steel tonsillectomy and bipolar electrocautery tonsillectomy. Coagulation tonsillectomy works on the principle that it uses low temperature radiofrequency to cut the tissue. The aim of this study is to compare between clinical outcomes of bipolar electrocautery tonsillectomy and coagulation tonsillectomy in pediatric population. The follow-ups were at week 1, week 2, 1 month, and 3 months regarding to the pain severity and duration, bleeding, healing, and study of coagulation tonsillectomy, and group B included of bipolar electrocautery tonsillectomy. Patients actually were recruited from OPD of ENT department. They were collected from Feb to August of 2022, and informed consent was also taken from the guardians of the patients. The inclusion criteria of this study was regarding age 3 to 12 years of age of both the genders, who were having recurrent tonsillitis episodes, and patients who had snoring or sleep apnea. And the exclusion criteria of this study was patients who had metabolic syndromes, storage diseases, bleeding tendencies, patients with Down syndrome, or the patients who were either below 3 years or above 12 years of age. And the patients who had lost follow-up or the guardians refused to participate in that study. Now, the pre-procedural assessment included of detailed history taking, complete physical examination, and other routine investigations. The operative procedures for both the groups, general anesthesia was used, and patients were PAS and ETT. In group A, 60 patients were included, EVAC 70 extra, plasma band was used at the ablation setting of 7 and coagulation setting of 3. For group B, which were bipolar electrocautery tonsillectomy patients, so 60 patients were included with COVID and forceps effects with state bipolar forceps. The device was used at a standard setting of 40 for both dissection and cauterization. Here are the pictures
Now this picture, the picture one actually shows intraoperative image of population tonsillectomy. The picture B shows it is immediate postoperative image of surgical bed in population tonsillectomy. While this third picture shows immediate post-op image of surgical bed in bipolar tonsillectomy. In post-op care, painkillers like acetaminophen and ibuprofen were used. For antibiotics, amoxicillin and clavulanic acid were used. If the patient had penicillin allergy, then clarithromycin was used. Follow-up was at week 1, week 2, a month, and 3 months. So in this case, guardians actually they fill the sheets about the inquiries, and complete physical examination was performed at each visit. Regarding study outcomes in pain, on each visit, patient's guardians actually chose a suitable picture or score. They used Wong-Baker Fist pain rating score, which is from 0 to 10, and a total of 40 score was used for 4 visits. Regarding pain, duration of pain was also recorded. In post-op bleeding, both the reactionary and secondary hemorrhage were actually recorded for the patients. For healing, guardians were actually taught about the inspection of healing daily at home, and on each follow-up visit, tonsillar bed was actually checked for healing and disappearance of white healing membrane. And the exact day at which this membrane disappeared were also noted. In results, we have total 120 patients. 60 were included in group A, which was population tonsillectomy group, and 60 were included in group B, which were bipolar electrocardiogram tonsillectomy patients. For the data assessment, following points were noted: that age, sex, post-op pain and severity, with duration, post-op bleeding, and healing at the follow-ups. Now results. In demographics, age and sex of the patients were actually noted, but the statistical analysis shows that both the age and sex had no significance, statistical significance. You can see the p-value of both these values, that it is 0.126 and 0.143, which is non-significant, and the average age of the patients were 7 years. Regarding pain, for group A, on the first, second, third, and fourth visit, we can see that the first visit, patient had a mean pain score of 9.32 with standard deviation of 0.62. While at the second visit, we can see a clear decline of 5.62 at the second visit. For the third visit in group A, it was 2.10, and at the fourth visit, it was 0.22. While comparing to the group B, actually, it had no clinically a significant difference at the first visit. Like in group A, it was 9.32, while in group B, it was 9.97. And at the second visit for a group B, it was 9.03. At the third visit, it was 6.13, and at the fourth visit, 1.75. We can see that there is a clear difference between group A and group B regarding pain. And the p-value were significant for all of these follow-up visits. Next, we can see that overall mean pain score is also discussed here. It ranged from 0 to 40. As I have already told you that a total of 40 score was allocated for the four visits, 10 score for each visit. So it was for group A, it was ranging from 13 to 22. For group B, it was 20 to 35. And it has significant p-value. While for the duration, for patient group A, it was 13 to 21 days and 21 to 35 days for group B. While the mean with the standard deviation of 2.2 was 16 for group A. For group B, it was 25.3 days with standard deviation of 3.7. We can also see that the pain duration was actually longer for the group B, who were bipolar tonsillectomy patients. For reactionary and secondary hemorrhages, group A had no such episode, while group B had 6 patients had bleeding episodes. For the healing, for group A, it ranged between 8 to 17 days. For group B, it was from 15 to 26 days.
So again, in all of these 4 points, we can see that p-value was significant for our theory that coblation tonsillectomy is actually better than bipolar tonsillectomy. Now, incidence of post-op bleeding, in group A, there was no bleeding. In group B, there were actually 6 total cases. 4 patients had reductionary hemorrhages, while 2 patients had secondary hemorrhages. So all of them were admitted to the hospital, but they were not rushed to the OT theater, and they were managed conservatively. In discussion, this report actually aimed at comparing outcomes of coblation tonsillectomy versus bipolar electrocautery. Coblation is mainly dependent on chemical rather than thermal effect. The word coblation actually comes from controlled ablation, in which low temperature radio frequency is used along with the conductive medium. So this principle makes it safer during tonsillectomy, which also results in reduced pain severity and duration. So in this report, the pain severity between both the groups was significant. On the first visit, the difference in mean pain scores did not reflect a meaningful clinical difference, as I already told you in the previous table. These are the supportive studies. This study actually had conflict with our current study. It is a study by Hassan and Associates, which actually is disagreement with our study. They actually reasoned it that this study by Hassan et al. Was of smaller size, and the patients included in this study were of an other age group. They were of 21 years. So that is not concerned to our study group, which is 3 to 12 years of pediatric population. So meta-analysis of the literature is that coblation tonsillectomy showed safe and acceptable results, which were similar to standard tonsillectomy techniques in regarding post-op bleeding. These findings were also supported by a study in Denmark, which had a different population. It was a non-blinded prospective study. So the authors explained that the incidence of post-op bleeding events in this study can be explained by following factors. That in coblation, patient had lesser pain, so patient could swallow easily. They had better oral intake in the early post-op period. This privilege has its impact on reduction of post-op infection, which otherwise can lead to hemorrhagic consequences. So the healing of the post-op bed was more prompt in the coblation group. This was indicated by complete disintegration of white healing membrane. It had advantage over the bipolar group. Now the faster healing in coblation tonsillectomy, it was explained by lesser thermal heat effect during dissection. So there was less tissue trauma, which enabled to the fast recovery, and there was less granulation tissue and less scarring. Now regarding coblation, the reason is that the temperature is around 45 to 85 degrees Celsius in coblation devices, while for the bipolar, it is around 300 to 400 degrees Celsius. And the positive aspects of this study were that it was a prospective study and it was a randomization study. A randomization in a sense that the guardians of the patients were actually given cards upside down, and they had to choose a card. Each card actually included two options. One was that either patient will go for the coblation tonsillectomy or for the bipolar tonsillectomy. The drawbacks of the study were the sample size was small, there was lack of proper matching of indication for tonsillectomy for both the groups, and there was lack of control. Either it was tonsillectomy alone or it was adenotonsillectomy. So, and also researchers had to educate the guardians for the shape and characters of the slough membrane. Other drawbacks were that the guardian's history was actually the source of sleep disorder breathing rather than polysomnograph, which is actually recommended. So relatively high cost of this investigative procedures was confirmation test, which was not used in this study due to cultural difficulties and other reasons. A comparison of duration stay between the two groups was not actually made. Like when was the patient admitted and when they had to decide the patient.
The conclusion of the study is that coblation tonsillectomy is superior to bipolar tonsillectomy. There were fewer bleeding incidents. There was shorter recovery period, lesser pain severity scores, and shorter pain duration. So the difference is of limited clinical value during the first week after surgery, as we have already seen in the table. These benefits could be carefully weighed against the high cost of coblation devices. These are the references of this study. Thank you so much. सर टोंसलेक्टमी वर्सेस टोंसलोटमी में सर ये आ जाता है, टोंसलेक्टमी में तो हम एक्स्ट्रा कैप्सुलर डाइसेक्शन कर रहे होते हैं, वाइल इन टोंसलोटमी सर हम इंट्रा कैप्सुलर हम हम कैप्सूल को रिमूव नहीं करते, हम कैप्सूल के अंदर जो टिश्यू है उसको रिमूव कर रहे होते हैं। जिस तरह से CO2 लेजर जो है वो यूज किया जाता है सर, क्रिप्टोलाइसिस। So yes sir, population ये टॉसिलेक्टमी की है, टॉसिलेक्टमी का टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया 85 सेल्सियस तक, वैसे ये 35 सेल्सियस तक हो गया और 25 ये आपने कहाँ से सर स्टडी से ही। तो ये कौन सा कॉम्बिनेटर उन्होंने यूज किया? स्विक नेफ्यू नहीं सर, एक मिनट। 300 सेल्सियस तो बाइपोलर का इतना टेम्परेचर नहीं होता, बहुत सारा टेम्परेचर 300 सेल्सियस है सर। ऐसे ही है मुझे आप वो भी था लेकिन स्टडी में ये लिखा क्योंकि मैंने इसको था, तो फिर मैंने इसको एज स्टडी में क्या जी सर 5 सेल्सियस भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें कंटीन्यूअस 3 चैनल होते हैं, वन इज वर्किंग चैनल, जी सर, सेकंड कट करने वाला चैनल और तीसरा चैनल है एब्लेशन या उसकी कोएगुलेशन को प्रेस करेगी तो साथ ही पानी आएगा, वो कोल्ड डिवाइस इसको गर्म टेम्परेचर पे दोबारा करेंगे। चलिए अब मैं ठीक सर। ये समझाएं सर कि आप क्या समझाएंगे, अब हम क्या करें, हम कोएगुलेशन करें या बाइपोलर करें? सर सुपीरियर टू जो 4 एस्पेक्ट्स थे हमारे पेन को देखने के लिए कि पेन सेवेरिटी पेशेंट्स में और पेन का ड्यूरेशन, उसमें भी सर सुपीरियर रहा है, कोब्लेशन रहा है। लेकिन जो फर्स्ट वीक है उसमें सर कोई क्लिनिकल डिफरेंस नहीं है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। दोनों में जो मीन पेन स्कोर था वो 9.9 एंड 9 पॉइंट समथिंग बाइपोलर में था। लेकिन जो सर जो फर्दर फॉलो विजिट थे उसमें हमें क्लियर जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस मिला है, पेन में भी और हीलिंग में भी हमें मिला है सर। जो हेमरेजेस के एपिसोड कोब्लेशन में कोई नहीं थे जो इनकी स्टडी उसमें, लेकिन जो हमने बाइपोलर यूज किया उसमें सर 6 पेशेंट्स इनके ऐसे थे जिनको हेमरेजेस हुए हैं। तो इसी तरह से सर जो ड्यूरेशन था हीलिंग का जल्दी हील अप। जी सर जल्दी हील हो। सो डू यू एग्री विद दिस स्टडी? आप इससे एग्री कर रहे हैं या इसमें कोई फ्लॉज है स्टडी में? सर फ्लॉज कुछ है स्टडी में, लाइक या सर 100 जो सैंपल साइज सर 120 पेशेंट्स के ऊपर आप एक चीज को जनरलाइज नहीं कर सकते, ठीक है, पूरी दुनिया को फॉलो करने के लिए। दूसरे नंबर पे सर ये भी था कि सारी इन्फॉर्मेशन सर डिपेंड कर रही थी गार्डियंस के ऊपर। तो एक सब्जेक्टिव ये एक स्टडी थी, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट जो है वो फाइंडिंग्स और डिफरेंट चीजें वेरी करती है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऐसा नहीं है कि पेन को और बाकी चीजों और जो तीसरा सर इसमें स्लीप डिसऑर्डर के लिए की गई, तो स्लीप डिसऑर्डर पेशेंट्स का वही जो पेशेंट जिन्होंने बताया कि पेशेंट अगर माउथ ब्रीदिंग स्नोरिंग कर रहा है तो उसी बेस पे इन्होंने वो करके तो उसको इंडिकेशन मान लिया।
और सर फिर ये भी है कि जो उन्होंने इस चीज को डिफाइन नहीं किया कि इन्होंने किस स्टेज के ऊपर पेशेंट को एडमिट किया। स्टेज सर मतलब ये कि पेशेंट को कितनी देर हो चुकी थी, जो इंडिकेशन पे उन्होंने किया कि रीजन टॉन्सिलाइटिस था। मतलब आप समझे कि उन्होंने इंडिकेटेड टॉन्सिलाइटिस। ठीक है सर, ठीक है। चलिए आप मेरी लॉ तो ये है सीनियर सर्जन के करने पे और जूनियर सर्जन के करने में फर्क है। जो भी अगर आपने टॉन्सिल बैंड को वायलेट किया है, आपने कोवलेशन से किया है, आपने बाइपोलर से किया, ये किसी मेथड से वो ज्यादा बेहतर होगा। पहला फ्लॉ तो ये है कि सर्जन को उन्होंने मेंशन नहीं किया कि हु इज द सर्जन। यस सर, जी सर। दूसरा परसेप्शन गार्डियन है और पेन को मेजर करने का कोई स्केल है। यस सर, हर एक का पेन थ्रेशोल्ड डिफरेंट है। तो मेरा पेन थ्रेशोल्ड है, वो तो लड़कियों का बिल्कुल नहीं है। ठीक सर, जी सर, आप परसेप्ट नहीं कर सकते। जैसे होते हैं वो थोड़ी सी पेन होते हैं, वो एंग्शियस हो जाते हैं या आपको बार बार एनालिसिस देना पड़ता है। यस सर। दूसरा ये पेन की जो असेसमेंट है, जो से असेस हो सकती है चीजें इस स्टडी के तहत। पहले तो असेस हो सकता है कि जो रिएक्शनरी हैमरेज सेकेंडरी है, ये ऐसी चीज है जो फिर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। यस सर, दूसरा एग्जामिनेशन, यस सर। जिस फोसे में ज्यादा स्नफ होगा वो ज्यादा वायलेट हुआ, ज्यादा इंजरी हुई। जी सर। जितना कम स्नफ बनता है उतना वो स्मूथ होता है। और सर स्लफ को मॉनिटर करने के लिए भी डिपेंडेंट थे गार्डियंस के ऊपर। वो तो आप डॉक्टर देख सकते हैं। जी सर, गार्डियन डॉक्टर जी सर, वो नहीं है सर। यही इसमें ये भी मसला था कि उन्होंने पेशेंट गार्डियंस को एजुकेट किया। जी सर, कोई भी स्टडी जो भी आप मेथोडोलॉजी कर रहे हैं, कोई भी स्टडी बिल्कुल सर, क्योंकि खास पैरामीटर को असेस करने के लिए होती है। तो आइडियल स्टडी कोई भी स्टडी राइट सर। हमने जरूरत बात का बताया था कि हम इसमें कुछ टेक होम मैसेज दे रहे हैं। यस सर। एक्चुअल हर सेंटर अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा होता है ऐसे कर रहे हैं और उनके अच्छे रिजल्ट है। वन यस। दूसरा जनरल क्लब का मैसेज ये होता है कि हम जो हम कर रहे हैं, हम अपना कंपैरिजन उनके साथ है, जो उनकी अच्छी चीजें हम अडॉप्ट करें, जो हमारी बुरी चीजें जिसमें हमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो रही है, मरीज सफर हो रहा है, वो छोड़े और आगे बढ़े। बस एक ही मकसद है जनरल क्लब। ठीक सर। वन now come to the topic, what is copulation, tonsillectomy, and what is the bipolar? So copulation is a device, it's a cold device. Yes. So what does it do? It do ablation. So what is ablation? Ablation क्या होता है? ये आपको समझ आएगी क्योंकि उसके दो चैनल काम कर लेते हैं। एक कैलकुलेशन कर रहा होता है, जैसे कोई वेसल आई है, आपने उसे कैलकुलेट कर और एक अबलेट कर रहा होता है। व्हाट इज अबलेशन? ऐसा तो लगता है ये ब्लेड पा जाता है। अबलेशन का मतलब कटिंग करना होता है, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी से उसको ब्रेक डाउन करके एक्चुअली अबलेशन का मतलब होता है मेल्ट करना। समझ गए ना? बर्न और मेल्ट में तो फर्क सामने एक मिनट में सामने आ कि जो all the tonsillar attachment either it is fibrous or vascular कर रहे हैं, तो इसकी टेक्नोलॉजी में फर्क है। यस सर, बर्न कर रहे हैं। तो उससे पहला फायदा क्या होगा? पहला फायदा तो ये होगा कि जो बर्न से स्कारिंग होती है, चारिंग होगी। पहले सबसे पहले बर्न होगा, फिर उसमें चारिंग होगी, फिर स्कारिंग होगी, ऐसे होता है। तो ये तीनों पेन स्टेप। बेल्ट का मतलब है उसे वो अबलेट कर देना, तो इसमें स्कारिंग चारिंग कम होगी। जी सर। बाकी स्टेप्स ऑफ सर्जरी इज सेम, चाहे आप कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, बाइपोलर कर रहे हैं, किसी भी मेथड से, किसी भी तरीके में अगर आपने टॉन्सिल को वायलेट किया, पिलर डैमेज किए, फोसे के अंदर लेबल टॉन्सिल
ये कोई टेक्नोलॉजी का फर्क नहीं रहता। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपको अच्छी नॉलेज चाहिए। आप कोई भी टेक्निक यूज कर रहे हो, उसमें आपने कैप्सूलर इंटीग्रेशन और फुल रिस्पेक्ट टू प्रोसेस पिलर्स, ये बेसिक स्टेप्स वही है जो भी आप टेक्नोलॉजी कर रहे हो पहले। अब आ जाइए कि जो कॉम्बिनेशन का दूसरा क्या एडवांटेज है, इसमें जो छोटी छोटी वेसल्स हैं आप साथ साथ उसे कोऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर आप बाइपोलर कर रहे होते हैं तो बाइपोलर में जितने आप बड़े वेसल कर रहे हैं वो टेम्परेरी तो वेसल हो जाएगी, लेकिन जो बड़ी वेसल है बाद में वेसल हो जाएगा। 6 पेशेंट्स को सेकेंडरी हेमरेज हुआ जो एक कंजर्वेटिव उन्होंने मैनेज किया, तो ये थोड़ा सा उसका एडवांटेज हो जाएगा अपलेटिव का। अपलेट्स जो है इसमें क्योंकि वो कम डैमेज है, कम स्कारिंग है, कम चारिंग है, उसमें वो कम होने का खतरा होता है सेकेंडरी हेमरेज। एक्चुअली हेमरेज तो कम होता है क्योंकि पहले 24 आवर गुजर जाए तो फिर वो सेफ पीरियड में आ जाता है। चलिए और आगे बताओ जरा। तो टॉसिलोटमी रिकमेंडेड प्रोसीजर नहीं है। अगर आप थोड़ा सा रेमिनेंट टिश्यू टॉसिल का छोड़ेंगे दोबारा ग्रो अप कर जाएगा। तो one message is tonsillectomy is the procedure. Tonsillectomy is not any procedure. So आपने tonsillectomy जो पीछे कोई टिश्यू छोड़ना वो सही नहीं है। चले आगे बताइए, आ जाएगा सामने वो फोनेटिक। अच्छा चलिए हाँ पूछो। Dr. Nishan, I would like to ask that could you tell us that what are the cost effectiveness of both methods in terms of how frequently we can get one method done over the other? And my other question is that what is the learning curve for resident surgeons here for both the methods? How well you can master one method over the other, and how easy it is in setups to get a coordinator. Thank you. Okay. So regarding the cost of the devices, coordinator is actually an expensive device. One bipolar device is not as much expensive as compared to the coordination device. First question. The second one regarding the learning curve for junior residents like us, it is actually both have the learning curve. I haven't experienced the coordinator, and neither I have experienced the bipolar devices. Actually, we are working with the cold dissection method, so I can tell only about the cold dissection method. Maybe sir can guide us. अच्छा आपको ब्रेक कर दो Sir, over to you. देखिए ऐसा है कि कॉबलेटर की बहुत महंगी डिवाइस नहीं है। कॉबलेटर का एक प्रोब होती है जो हर प्रोसीजर के लिए डिफरेंट होती है। सो इट कॉस्ट अबाउट 35 to 40,000, लेकिन आप उसे एक से ज्यादा कॉस्ट में कर सकते हैं क्योंकि उसका जो वर्किंग चैनल होता है उसमें कार्बन आके वो फिर आस्ते आस्ते वो घिस जाता है। सो इट मीन कॉबलेटर का जो वर्किंग एक जो है पोर्ट है वो 35,000 होता है, लेकिन आप उसे मोर देन 10 कॉस्ट कर सकते हैं अगर आपने उसे अच्छे से स्टरलाइज किया है। वैसे वो डिस्पोजेबल डिवाइस है, लेकिन हमारे सेटअप में बड़ा मुश्किल है, हर मरीज के लिए अलग से करेंगे। वन उसका आपको पता ही है जो है रीयूजेबल होती है बाइपोलर, तो वो जरा कॉस्ट इफेक्टिव है। तो दूसरा सवाल आपका क्या है? सीखने का लर्निंग कर्व वही है जो हम आपको कोल्ड सेक्शन से सिखा रहे हो, जिस पे मैं आपको एक ही स्ट्रेस करता हूँ कि अवॉइड कॉर्टिक। तो अगर आप अपना डेटा भी करें, वो मरीज उनको पोस्ट ऑपरेटिव दर्द कम होती है जिनमें आपने कम कॉर्टिक यूज की होती है। तो एज ए रेजिडेंट मेरी एडवाइस ये है कि आपको नंबर 1 कोल्ड स्टील मेथड इज एन आइडियल मेथड, ये टाइम टेस्टेड टेक्निक। तो आप उसी को करें, डोर पोल को टाइट करें हमेशा। पहले वो स्नेर करते होते हैं, ठीक है, वो स्नेर का मतलब है कि वो क्रश करके आ जाता है। तो ऐसी ब्लड वेसल्स जो मौके पे तो आपने क्रश कर दिए, लेकिन आप उसके बिहेवियर को
बाद में ही प्रेडिक्ट कर सकते, फोरकास्ट नहीं कर सकते कि ये कैसे करेगा। इसलिए जब से हम नो टोल को टाई कर रहे हैं और जितने भी सस्पिशियस लीडर को फिक्स कर रहे हैं, तो इंसिडेंस ऑफ रिएक्शनरी हेमरेज पीरियड खत्म हो चुका है। एक्चुअली हेमरेज अब हम नहीं देखते, हम सिर्फ सेकेंडरी हेमरेज देखते हैं। वन और सेकंड नंबर पे अगर आपने नीट लॉस टेक्निक की होगी तो शायद ही एक आध लीडर होता है जिसको आपको फिक्स करना हो। तो सबसे कल्प्रिट दो ही रीडर होते हैं इसमें, वन पेराटोस्टम है जो रूफ से आ रही है और फ्लोर पे जा रही है, सेकंड लोअर, एंड दैट्स इट। ठीक है, तो अब टेक होम मैसेज क्या है फॉर रेजिडेंट? टेक होम मैसेज ये है कि आपको उस वक्त तो बड़ा आसान लग रहा होता है यूनिपोलर से बाइपोलर से करना, लेकिन उसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन होती है। तो हाँ, अगर आप टफ सिचुएशन में फंसे हुए हैं, यस यू कैन यूज उस मुश्किल से निकलने के लिए, लेकिन आपने अगर अच्छी टॉस रैकनी सीखनी है, करनी है, तो आप ट्राई टू आइडेंटिफाई द प्लेन्स, फिक्स द ब्लिटर एज जेंटल एज। तो सेकेंडली ये बड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा ऑपरेशन होता है, और कभी ये फंसे तो बुरे तरीके से बंदा फंसता है। तो आपको हर टेक्नोलॉजी, हर टेक्निक आनी चाहिए, उसे को कैसे फिक्स करना है, और बाइकल अगर यूज करनी है तो वो कैसे करनी है, और आप सिक्स यूज कर रहे हैं तो वो कैसे करनी है। तो सारी टेक्निक पे आपको दूर होगा। अगर सिर्फ आपको सिर्फ बाइपोलर ही करनी आती है, सब अगर स्टक हो सकते हैं किसी पूरे ब्लेडर में। सही, फाइनल कंक्लूजन क्या हो? कंक्लूजन ये है, चाहे आप रोबोटिक सर्जन है, चाहे आप वैसे सर्जन है, जो स्टेप्स ऑफ सर्जरी, टेक्निक ऑफ सर्जरी सेम ही होती है, जो बेसिक स्टेप्स लिखे हुए था। ठीक है, एक्सपीरियंस के साथ आप उसको अल्टरेशन हो जाती है यहाँ पे, लेकिन अगर आप वो बेसिक स्टेप्स भी फॉलो करेंगे तो सेफ सर्जरी। व्हाट एल्स आप अगर कोई टर्म सेलेक्ट करने के बारे में, तो इसमें अच्छी चीजें ये थी कि उन्होंने बड़ा अच्छा इसको फॉलो किया मरीजों को। हालांकि हम टॉस रखने के बाद इतना अच्छा फॉलो नहीं कर सकते, तो उन्होंने बड़ा अच्छा फॉलो किया, और उन्होंने उसका क्राइटेरिया जजमेंट बड़ा अच्छा बनाया। चार चीजें उन्होंने सेस की, और दूसरे नंबर पे उन्होंने जो कॉबलेटर है उसकी भी इम्पोर्टेंस बता दी, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इसमें कन्विंस नहीं होते कि कॉबलेशन क्या है, लेकिन कॉबलेशन वेरी गुड डिवाइस। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं लास्ट 4 ईयर से मैं कॉबलेशन कर रहा हूँ। तो और अपार्ट फ्रॉम टॉसरेक्टमी कॉबलेशन की और बड़ी इंडिकेशन है, लाइक हम कॉर्डोटमी है तो आप वोकल कॉर्डोटमी विद कॉबलेशन करें, उससे कोल्ड वाइज बिल्कुल डीमा नहीं होता, क्योंकि जैसे हम लेजर कॉर्डोटमी करके डीकर्वेट करते हैं, इसका बड़ा एडवांटेज है कि आप कॉबलेशन कर सकते हैं नेजल कैविटी में, टर्बिनेट कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसके काफी इसकी इंडिकेशन है। अब ये एंजियोफाइब्रोमा में कॉबलेशन टेक्नोलॉजी, और मेरा कॉस्ट इज 2 मिलियन, अराउंड 2 मिलियन, बहुत ज्यादा महंगी डिवाइस नहीं। बस ये है कि इसके वो वेंडर जो शेवर आगे मिलते हैं वो है आपको यूज करते हैं। में मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी है, उसमें हार्मोनिक स्कैल्पल टाइप चीजें ज्यादा यूज होती है, इसमें मेरा नहीं था। तो ऐसा ब्लेडर जिसको वैसे आपने फिक्स करना होता है। बस इसमें यह है कि आप ऐसी वैसे इसको आप उधर ही कैलकुलेट करना चाहें, एज ए सर्जन हम सेटिस्फाइड होते हैं उसको फिक्स करते हैं। हाँ, उसमें ये भी है, या बर्नआउट कर देते हैं लाइव लेजर। ठीक है, व्हाट एल्स आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है? प्रोबेटर का लिए लिविंग सेंटर टाइज एंड डाइसेक्शन के साथ ही सबसे पेशेंट को काम किया जाती है, पोस्ट ऑफ रिकवरी की सबसे अच्छी। और जो अपने मेरा एक्सपीरियंस ये जो है
कि जितनी पेशेंट को काम पे होंगे उतनी जल्दी पेशेंट का प्रोसेस हील करता है, उतनी जल्दी वो swallow करना शुरू करता है, खाना पीना शुरू करते हैं, तो उतनी जल्दी नॉर्मल। अगर पेशेंट को पेन होती है तो वो खाना पीना छोड़ देते हैं, फिर सेकेंडरी हेमरेजेस होती है हमारे पास वापस। और दूसरे नंबर पे ये है, अगर इफ यू आर ब्रेडिंग सर्जन, पेशेंट को पेन है तो आपकी एग्नी है ना, आपकी हेडेक है आपको, पेशेंट को तो है ही है। स्पेशली अगर आपने प्राइवेट की भी टॉस है और दूसरे दिन फोन आएगा दर्द हो रही है, दर्द हो रही है, तो आपको एक ऐसे एक पिच कर रही होती है चीज। ठीक है, सो सॉफ्ट टिश्यू हैंडलिंग, अवॉइड फोसा वायलेशन, identification normal structures और प्रॉपर फिक्सेशन ऑफ वेसल्स ब्लीडिंग। क्योंकि जो ही आप मसल को रप्चर करेंगे ना तो ब्लीडिंग होती है। अगर आप सही प्लेन्स में है तो फिर ये बड़ा स्मूथ ऑपरेशन, लाइक अपेंडिसेक्टमी समझिए, स्मूथ है तो स्मूथ जा रहा हो, ट्विस्ट हो जाए तो फिर ये कॉम्प्लिकेट हो जाता है। सर पॉपुलेशन को एडवांस टेक्निक है ना, मतलब अब रिसेंट हुआ है तो हम एज बी रेजिडेंट हम कोल्ड स्टील मेथड को बहुत ज्यादा वो करते हैं। तो अगर हम कंपैरिजन करें पॉपुलेशन वर्सेस कोल्ड स्टील तो फिर हम उसके कंपेयर में तो कोल्ड स्टील को ठीक एक्चुअली मेरा ख्याल है कि जब भी आपने ये दो, जब भी आपने कंपैरिजन करना होता है दो टेक्नोलॉजी या दो टेक्निक्स को करना होता है, तो मेरा ख्याल है कि अगर आप पॉपुलेशन करेंगे तो फिर उसमें तो कोई टेक्नोलॉजी यूज ही नहीं हो रही। हाँ, फिर ये है कि आप स्टिच लगाएंगे उसको, कुछ ऐसा करके करेंगे फिक्सेशन, हेमोस्टेसिस को फिर आप करेंगे, डब्ल्यू से हेमोस्टेसिस किया। So basically dissecting the clear techniques or studies for the training is what those are जो एक आधी स्टडी की जिसमें डायसेक्टर और कॉम्बिनेटर को कंप्लीट वो 2011-12 की 11-12 इस वजह से ये लोग ये लिगाशोर भी यूज कर रहे हैं आजकल, लिगाशोर सर्जरी वाले यूज करते हैं, उससे भी टॉन्सिल को खींचिए और बस करें और बाहर आ जाए लिगाशोर। हार्मोन भी वही चीज है, लेकिन लिगाशोर जरा ज्यादा स्मार्ट है। वो पेनफुल नहीं होगा जो फ्लिप होगा उसमें, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैंने एक दो सर्जन्स को देखा सुना है कि वो कह रहे हैं हम लिगाशोर से करते हैं, क्योंकि गार्डनेस में तो रूल्स होने और ज्यादातर तो पेशेंट फॉलो करेगा even कि वो भी पेशेंट को काफी पेनफुल होता है, जिस स्टमक में टिप्स लगे करके तो बड़ा मास जी सर।